guys, this is a station on the uterine artery embolization, and this is a very common station for the exam. This is a picture which shows the uterine artery embolization. This is the catheter which is passed through a femoral artery to the uterine artery, and then the branching which are supplies to these fibroids, mean feeding vessels which are supplied to the fibroids. So these particles are the polyvinyl alcohol particles which are injected through this tube. So if the examiner is asking from you what is this picture and identify the picture, or sometimes they are asking for what is this, you will say this is the picture which shows the procedure of the uterine artery embolization, and this is the fine tube which is passed through femoral artery then to the uterine vessels, and these are the polyvinyl alcohol particles which are injected through these tubes, and this is the intramural fibroids which get the blood supply get blocked. So this is the picture of the uterine artery embolization. How it is performed? It is performed under radiological guidance after selective catheterization of uterine artery via one or both femoral arteries. Polyvinyl alcohol particles are injected to embolize the uterine vascular bed. It is performed under local anesthesia. No need of general anesthesia. It's performed under local anesthesia. So these are the polyvinyl alcohol particles which are used to get blocked. What are its complications? Persistent vaginal discharge, ischemic pain, post-embolization syndrome, which may constitute pain, nausea, vomiting, fever. Permanent ovarian failure in 1% of the cases. Infection, septicemia, which may necessitate removal of the uterus. Subserosal fibroid adherent to the bowel lead to bowel necrosis and peritonitis. Re-intervention mean failure. So what are its benefits? HMB reduction in the heavy menstrual bleeding in 85% of the cases. 80% patient certification for 5 years. 50% reduction of the fibroid volume. Shorter hospital stay and early return to the work. Less risk of bladder and bowel damage. What are its contraindications? Active infection of genital tract, pregnancy, endometrial cancer, subserosal fibroid, submucosal fibroid. So these are its contraindications. How will you counsel the patient for uterine artery embolization? We have to counsel our patient after introduction, aim of consultation, setting the agenda and asking for the procedure. Have you know about that procedure? Okay, I'm telling you this is a procedure which involves inserting a lung tube into the blood vessel on your thigh and passing it to the vessel that supplies the womb, and then inject small particles that block that vessels. This will cut the blood supply to the fibroid, causing it to shrink in size, and it will not bleed with your periods every month. So show the picture to that. It involves the tube into the blood vessels in your thigh, then passing it to the blood vessel which supplies the womb, and after that we have to inject small particles into the blood vessels that will cut the blood supply to the fibroid, causing shrinkage of that fibroids. So draw the picture and then counsel the patient like this. In this way, patient understand what is the uterine artery embolization. After telling the procedure, you have to tell that the benefit, the risk, and prerequisites. The prerequisites is that before procedure, I would like to take a vaginal swab to rule out any infection. Now I will refer you to the radiologist for MRI to rule out any malignant change in this fibroid. So these are the prerequisites. Then we have to tell her the benefits. The benefit is that this procedure is equally affects to the removal of the womb. The good thing is that the womb is retained, and you may avoid all the complications of the surgery.
but it is associated with certain risk. These are vaginal discharge, pain, fever, nausea, but these are the signs that operation is successful and that will went off, resolve on its own. Skin bruising on the site where the needle is inserted. The fibroid may detach into the womb cavity. This fibroid may detach into the womb cavity and it may require another procedure. Sometimes there may be the infection and severe infection which may necessitate the removal of the womb. Sometimes these particles get accidentally injected into the vessel that feeds the ovary, and if blood supply to the ovary is blocked or is stopped, it will lead to the ovarian failure. So you may have difficulty in getting the children if you wish to. So this is in the 1% of the cases. If women, the 100 women have this procedure, the one woman will get this ovarian failure. If you get pregnant in the future, you are at risk of giving birth early, that we call it a premature labor or premature birth, slow growth of the baby in the womb, or having bleeding after the delivery, we call it the PPH. So these are the risks associated with these procedures. Do you have any questions? Am I clear to you? Thank you. So coming to the Urdu version, उर्दू में कैसे काउंसलिंग करेंगे? अपने इंट्रोडक्शन करवा लिया, अपना एजेंडा बता दिया, एम बता दिया, सब कुछ बता दिया, फिर उसको प्रोसीजर के बारे में बताना है कि ये एक तरीका इलाज है फाइब्रॉइड के लिए, जिसमें हम रान की शरियान में एक छोटा सा ट्यूब डालते हैं जो बच्चेदानी की शरियान तक जाएगा। फिर हम उसमें छोटे से केमिकल्स के टुकड़े, छोटे छोटे से, उसको पिक्चर ड्रा करके बताना है, ऐसे ही जैसे ये ड्रा की हुई है, छोटे से केमिकल के टुकड़े डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे, जो फाइब्रॉइड की शरियानों को, जो खून फाइब्रॉइड को पहुंचाती है रगें, शरियानें, उनको बंद कर देगा, उनको ब्लॉक कर देगा, तो ये खून जाना बंद हो जाएगा। जब यहाँ पे खून नहीं जाएगा इस फाइब्रॉइड में, तो ऑटोमेटिकली इसकी साइज़ कम होके ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पीरियड्स सही हो जाएंगे। और ये इतना फ़ायदेमंद है कि बच्चेदानी, जितना बच्चेदानी का निकालना, मगर अच्छी बात यह है कि आपकी बच्चेदानी नहीं निकाली जाएगी और आपको जो ऑपरेशन के मुज़र असरात हैं, बेहोशी के मुज़र असरात हैं, वो सारों से बच जाओगे। ठीक है, आप कुछ और पूछना है? अच्छा, इन फ़ायदों के अलावा इसके कुछ मुज़र असरात भी हैं। ज़ाहिर ये एक प्रोसीजर है, एक तरीका इलाज है, तो उसके कुछ मुज़र असरात भी हैं। जैसे हमने ये ट्यूब पास किया है, तो यहाँ पे कभी कभी इस जगह पे, रान की जगह पे, ट्यूब पास करने वाली जगह पे नीले धब्बे पड़ सकते हैं, आपको दर्द हो सकता है, बुखार, मतली, उल्टी, दर्द। इसका ये मतलब है कि ये ऑपरेशन कामयाब है और ये अपना काम कर रहा है। आप उसके लिए परेशान नहीं होगा, ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम आपको दर्द की, मतली की दवाई दे देंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? कभी कभी इन्फेक्शन का ख़तरा भी हो सकता है और कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। कभी कभी ये फाइब्रॉइड इस बच्चेदानी की कैविटी के अंदर गिर जाता है, जब ये छोटा होकर निकलेगा, यहाँ से हट जाएगा, तो कभी इसके अंदर आ जाता है, तो हमें ये दोबारा से निकालना पड़ता है। कभी कभी ये जो केमिकल वेसल, ये हमने केमिकल डाला था, इसको बंद करने के लिए ये ओवरी की रगों में भी चला जाता है, फिर ओवरी पे भी खून जाना बंद हो जाएगा। तो इन केसेस में ये 100 में से एक औरत में होता है। ऐसे केसेस में फिर ओवरी अपना काम करना बंद कर देगी और अगर आप बच्चे चाहती हैं, फिर बच्चे नहीं होंगे। इन केस अगर बच्चे हो गए और आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो प्रेगनेंसी में आपका हमल टाइम से पहले हो सकता है, आपकी जिसकी टाइम से पहले हो सकती है, और कभी कभी बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की नशो नुमाइश कम हो सकती है। कभी कभी डिलीवरी के बाद खून ज़्यादा जा सकता है, जिसको हम PPH बोलते हैं। आपको कुछ और पूछना है? अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो प्लीज़ पूछ लें। शुक्रिया। So this is the Urdu version. Thank you.